So this lecture is in continuation with the previous lecture on black stem rust of wheat, which is caused by Puccinia graminis triticide, where we have already covered this topic up to the stages, that is a iridospore formation, teleutospore formation in case of wheat. So today, just continuing the previous topic, first we will get to know the basidial stage, which completes in the soil, followed by the rest of the stage that completes in the other hose, that is barberry. So basidial stage, the teleutospores which are formed on the wheat, they don't germinate on the wheat itself. Instead, they perennate and survive during the extreme of the environmental condition in the soil. And on return of favorable condition, that is high moisture content and low temperature, teleutospores, they germinate to form basidiospores. The teleutospores, they germinate in the soil and forms the basidiospores. So how it happens? As we know, the teleutospores, these are the bicell structures बाइसेल है with a stalk और इसके जो दो न्यूक्लियाई होते हैं they fuses together to form the diploid nuclei. These are the diploid nuclei and it is a bicell structure. Both the cells, they have germ pore. The germ pore for the lower cell is towards the lateral side, whereas the germ pore for the upper cell is towards the upper side. So the germination occurs through this germ pore. A promycelium is formed through the germ pores and there are two promycelium. This diploid nucleus then migrates in the promycelium here and undergoes meiotic division. Due to the meiotic division, 4 haploid cells are formed, out of which 2 are of one strain and 2 are of other strain. And there are 2 promyceliums because we have 2 cells. Yes? So 2 promyceliums are formed. Just like this. This also has, because of the meiotic division, 4 haploid nuclei. After the formation of promycelium and the meiotic division, we have one cell with 4 nuclei. This will be then followed by the formation of 3 septa. 3 septa बनेंगे ऐसे. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? Now we have separate cells. Now we have 4 cells and each cell has 1 nucleus. हर सेल के पास कितने न्यूक्लियस है? एक न्यूक्लियस है, ठीक है? This structure
now forms small structures which are known as steric It forms small steric and this nucleus, it migrates through this steric into a structure which is now known as basidiospore. So what is this? This is the steric and this promycelium now function as basidium. This functions as basidium on which 4 steric metas are present and each steric meta has one basidiospore which is present exogenously. Likewise, we have 4 basidiospores on this basidium also. So each telutospore, which is a bicell structure, will form 4 plus 4, 8 haploid basidiospore, out of which 4 are of plus strain and 4 are of minus strain. Okay, and these basidiospores, they will then germinate to form the प्राइमरी माइसीलियम. ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? प्राइमरी माइसीलियम. तो ये जो बेसिडियल स्टेज है बच्चे, कहाँ पे होती है? सॉइल के अंदर होती है. ठीक है, टेल्यूटोस्पोर वीट पे जर्मिनेट नहीं करेगा, इंस्टेड टेल्यूटोस्पोर सॉइल में जर्मिनेट करेगा और क्या बनाएगा? बेसिडियोस्पोर्स. ये बेसिडियोस्पोर्स, दे विल बी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. दीज आर दी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स either of plus strain or of minus strain. And these basidiospores, they will germinate to form the primary mycelium on host, that is barberry. Barberry अगर नियर बाय एरिया में है तो basidiospore क्या बनाएगा? प्राइमरी mycelium in barberry, the other host. So as I said, we will cover basidial stage followed by the rest of the stage which completes in the barberry. So this is the third stage, fungus on barberry. So what we say, once the basidiospores are formed, these basidiospores, they will germinate on barberry bushes. Okay, on the leaf of barberry. Whether the basidiospores are of plus strain or of minus strain, they will form primary mycelium on barberry leaf. Look, whether it is plus or of minus, these 4, they will germinate and penetrate inside the barberry leaf. After few days of germination, these basidiospores, they will form special structures which are known as spermagonia. ये प्राइमरी माइसीलियम क्या बनाएगा? स्पर्मेगोनिया या फिर pycnidial cup on the upper side of barberry. This primary mycelium will form pycnidial cup and another name for that is spermagonia on the upper side of the barberry leaf. And one another structure is formed, that is acetal cup. लेकिन acetal cup कहाँ बनेगा? On the
लोअर सरफेस पे कप लाइक स्ट्रक्चर होगा और थोड़ा लेट बनता है पिक्मीडियल कप के बाद। इट इज ऑल्सो ऑरेंजिश येलो इन कलर, orangish yellow in color. Okay, so let's start with the formation of spermagonia. पहले क्या करेंगे हम? The formation of spermagonia या फिर क्या बोल रहे हैं, pycnidial cup. After the germination of basidiospores, the basidiospore will form primary mycelium, and after around 4 days of germination of basidiospores, a cup-like structure, or what we say flask-like structure, is formed on the upper cell side of barbary. Okay, but before that what happens? Before the formation of this structure, a lot of mycelium gathers just like that below the upper epidermis between the palisade cells. ये कौन से सेल्स है? होस्ट के पेलिसेड सेल्स. ठीक है, तो a lot of mycelium it starts to gather below the upper epidermis of host, which will be followed by formation of a typical flask shaped structure जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेगोनिया. Okay, if you see the structure of spermagonia, it is a flask shaped structure जिसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? वॉल. ये क्या है? It is the wall, and each cell of the wall it forms an elongated structure. इस elongated structure को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे spermatiophore. Every spermatiophore is single cell structure और जिसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, क्योंकि प्राइमरी माइसीलियम है. ओके, that has been formed by the germination of haploid basidiospore. Okay, some of these spermatiophore are intermingled with sterile structures, और वो sterile structures क्या है? पैराफाइसिस. ठीक है, वो sterile structures क्या है? पैराफाइसिस. फिर there are several spermatiophores like this. Each spermatiophore it will bud out small round structure which is known as spermatia. ये स्पर्मेशियोफोर क्या बनाएगा? ये बनाएगा स्पर्मेशिया. ठीक है, और स्पर्मेशियो को स्पर्मेशिया में देखेंगे तो ये कैसा है? इट इज सिंगल सेल, एक ही सेल का बना हुआ है. फिर यूनिन्यूक्लिएट. अगर पॉजिटिव स्ट्रेन ग्रो किया है तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव स्ट्रेन ग्रो किया है तो इट विल बी ऑफ दैट स्ट्रेन. ठीक है, एंड दिस इज द वे इन अ बेसिपिटल मैनर दे आर अरेंज्ड इनसाइड द स्पर्मेगोनिया. इसके अलावा हर स्पर्मेगोनिया के अंदर एक स्ट्रक्चर और बनेगा विच इज एन एलोंगेटेड स्ट्रक्चर as compared to the paraphysis and spermatiophore, जिसको बोलते हैं receptive hyphae. Okay, receptive hyphae is a female structure.
peculiar sexual, the sex organs, they are absent in case of Puccinia. ठीक है, specialize नहीं होता है. Instead there is a hyphae, a mycelium which is called as receptive hyphae, और small spores होते हैं जिसको बोलते हैं spermatia. जहाँ पे इस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटाइजेशन. क्या बोलते हैं उसे? स्पर्मेटाइजेशन. ओके, स्पर्मेटाइजेशन की वजह से क्या बनेगा? डाइकैरियोटिक माइसीलियम. अभी तक हमारे पास कैसा है? मोनोकैरियोटिक है ना. यहाँ पे मैंने बोला सिंगल सेल है, एक ही न्यूक्लियस है. फ्यूजन से क्या हो जाएगा? डाइकैरियोटिक बन जाएगा बाय स्पर्मेटाइजेशन. ओके, सो दिस इज हाउ स्पर्मेशियाज आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पर्मेगोनिया. I have already labeled and drawn this structure. Here you can see this is the upper epidermis of the host. ये upper epidermis है. जैसे कि मैंने बताया था pycnidial stage. Pycnidium कहाँ बनेगा? On the upper side of the barberry, and escydial cup is formed on the lower side of the barberry. Okay, so this is the upper epidermis. Here the flower-shaped structure is formed by the germination of basidiospore. Okay, whether it is a positive strain or negative strain. एक ही लीफ के ऊपर different cups बन सकते हैं, कुछ positive के, कुछ negative के. Okay, so this is the wall of the spermagonia. Each cell of the wall forms a structure that is known as spermatiophore. Spermatiophore के ऊपर क्या बनेगा? Spermatia जो मेन स्ट्रक्चर है. इसके अलावा बीच बीच में कुछ सेल्स ऐसे भी हैं which are sterile in nature, उनको बोलेंगे पैराफाइसिस. प्लस बीच में कुछ सेल्स, कुछ माइसीलियम दे प्रोट्रूड आउट ऑफ द ऑस्टियोल. ऑस्टियोल और द पोर. इस फ्लास्क का एक ऊपर पोर है, ठीक है, ऑस्टियोल. यहां से बाहर निकलेंगे जिसको बोलते हैं रिसेप्टिव हाइफी, एंड इट इज द फीमेल स्ट्रक्चर. ओके, so a lot of spermatia are formed inside the spermagonia. Once these spores are formed, the spermagonia it secretes nectar, sweet nectar. It secretes sweet nectar. This sweet nectar it oozes out. कहाँ से आएगा ये बाहर? Through the ostiole. यहाँ से it oozes out. When it oozes out of the ostiole, it also carries with this, क्या आएगा इसके साथ बाहर? The spermatia. इसके साथ spermatia भी बाहर आ जाएंगे. Okay? And when an insect, because of the sweet nectar, visit this pycnidial cup, it carries the spores along with the nectar, and when it visits another ostiole or another pycnidial cup, the chances are there that the positive strain spermatia it can fuse with the negative strain receptive hyphae. ठीक है? There are chances that the insect carries the opposite strain of spermatia. अब उसकी वजह से क्या होगा? As I said in case of Basidiomycotina, plasmogamy हो जाएगी, लेकिन कैरियोगैमी is delayed. Okay? तो अब यहाँ पे क्या है? We have this, और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया, and like this. So what has happened? We are getting a dikaryotic stage. Dikaryotic क्यों है? Because both the nuclei are like this. They have not undergone fusion. यहाँ पे कैरियोगैमी नहीं हुई है. ठीक है? क्योंकि कैरियोगैमी नहीं हुई है, पहले जो मोनोकैरियोटिक स्टेज थी that has changed into the
डाइकैरियोटिक स्टेज। ओके, साइडवेज जब ये चीज चल रही है पिक्निडियल कप में, साइडवेज क्या होगा? दिस माइसीलियम इट स्टार्ट्स टू फॉर्म a structure just near the lower epidermis, और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एसीडियल कप। एसीडियल कप वर्ड होता है फॉर द मैच्योर स्ट्रक्चर, बट बिफोर दैट वी से प्रो एसीडियम। प्रो एसीडियम कैसे होगा? दिस माइसीलियम it gathers just below the just below the lower epidermis and form some cup-like structure. Initially cup-like structure कैसा होगा? इसमें basal cells होंगे and disjunctor cell होंगे। And this whole structure is made up of primary mycelium. ये पूरा का पूरा किसका बना होगा? प्राइमरी माइसीलियम का। जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, डाइकैरियोटिक स्टेज होगी, जो अदर न्यूक्लियाई है इट स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन दिस यूनिन्यूक्लिएट प्लेस, और इसको रिप्लेस करके क्या होगा? हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? पहले एक न्यूक्लियस था, अब हमारे पास कितने आ जाएंगे? 2 न्यूक्लियाई आएंगे। और कहां से आए हैं? बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट हैज अकर्ड इन द पिक्निडियल कप। And if you see the structure of pycnidial cup, it has a wall which is known as peridium. Okay, this is the mycelium which has gathered for the formation of this whole structure. तो पहले इसका नाम क्या बोलेंगे हम? प्रोएसिडियम। ओके, and it forms elongated palisade like structure. ये जो लंबे लंबे सेल हैं palisade like, इसको बोलेंगे basal cells. Okay, these are the basal cells, and each basal cell functions as acetiospore mother cell. It functions as acetiospore mother cell. क्यों? क्योंकि इन्होंने आगे क्या बनाना है? acetiospores बनाना है। बच्चे जो पहले स्ट्रक्चर बनता है ना, जो इनिशियली फॉर्म्ड होता है, यहाँ पे जो माइसीलियम होगा दैट विल बी प्राइमरी माइसीलियम, जिसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, द अदर न्यूक्लियाई विल बी कैरिड थ्रू रिसेप्टिव हाइफी इनटू दिस स्ट्रक्चर, एंड द सिंगल न्यूक्लियस इज नाउ हैविंग 2 न्यूक्लियस। ओके, दिस इज द डाइकैरियोटिक माइसीलियम हैविंग 2 न्यूक्लियस ऑफ ऑपोजिट स्ट्रेन। ठीक है, बेस है, दिस इज द बेस ऑफ द एसिडियल कप, कप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द बेस ऑफ द एसिडियल कप, जिसकी वॉल है थिक वॉल विच इज कॉल्ड एज पेरिडियम। Then we have elongated cells. These elongated cells are palisade like and they are known as the basal cells. Okay, these basal cells they function as acetiospore mother cell because they are going to form the acetiospores. Okay, initially whole structure is filled with the not disjunctor displacement cell. Displacement cell. Later on, what we say, each basal cell ये जो basal cell है, each basal cell, it will form. It is having 2 nucleus. Yes, it will form 2 nuclei by conjugate division. एक नया सेल बनाएगा कौन? ये बेसल सेल। ओके, दिस बेसल सेल
ये जो स्ट्रक्चर बना है, सेल बना है, ये सेल फिर से डिवीजन में जाएगा और क्या करेगा, एक छोटा सेल बनाएगा टुवर्ड्स द बेस एंड वन लार्जर सेल. The small cell which is towards the basal cell is called as disjunctor cell, and this cell is called as acidiospore. So each basal cell will form two cells. एक तो है sterile, वो sterile cell का नाम है disjunctor cell, and one is the fertile cell which is known as acidiospore. Likewise, फिर से division हो गई, forming एक small cell and one large cell having two nuclei. So in this way, series of disjunctor acidiospore will be formed by each basal cell, and this whole structure, that is the acidial cup, will be filled by acidiospores and disjunctor cell. Okay, these disjunctor cell, they helps in the separation of acidiospores from each other. Okay, initially if you see the structure of these acidiospores, they are polygonal. Yes, because of the pressure developed by this structure, this whole acidial cup, they are initially polygonal in shape, but once they are discharged, they become oval in shape. Okay, it is unicell, एक ही सेल का बना हुआ है, and binucleate, और जो दो न्यूक्लियस हैं, they are of different strains. तो ऐसे को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक. Okay, and it has two walls. Maybe the outer one, the exine, is ornamented. Okay, and intine is, it is smooth. Okay, like this. ऐसा structure है. Once they are formed, because of the pressure exerted by the newly formed acidiospores, the lower epidermis of the host cell, it ruptures, and as a result of which all the acidiospores, they come out. They are carried by wind, and these acidiospores, they cannot germinate on barberry. ये barberry में germinate नहीं करेगा. Instead, they will germinate on wheat plant. तो जब हमने start किया था ये lecture, I already told you that in wheat plant, the source of primary infection was either acidiospore, which are formed on the barberry leaf, or the other one is uridospores, which are formed on the wheat leaf itself. Okay, so acidiospores, they cannot germinate on barberry. Instead, they will germinate on the wheat plant, and this is how the cycle, it keeps on going. क्या है वो cycle? What is that cycle? It is wheat, barberry. ओके, वीट पे इन्फेक्शन कौन करेगा, या तो एसिडियोस्पोर जो कहां पे बने हैं, बारबेरी के अंदर, या फिर वीट के ऊपर और कौन से स्पोर बनते हैं, यूरेडोस्पोर जो दोबारा से वीट पे जर्मिनेट करेंगे, या फिर वीट एक और स्पोर कौन सा बनाता है, टेल्यूटोस्पोर. लेकिन टेल्यूटोस्पोर वीट पे जर्मिनेट नहीं करेगा. इंस्टेड इट विल जर्मिनेट इन सॉइल, और क्या बनाएगा, बेसिडियोस्पोर. और ये बेसिडियोस्पोर फिर कहां जर्मिनेट करेंगे, ऑन दी बारबेरी लीफ. सो दिस इज हाउ द साइकिल कंप्लीट्स बाय इन्वॉल्विंग टू होस्ट, दैट इज wheat and barberry.
That's why we say this disease is heterocious in nature, which involves two hosts to complete the life cycle. Okay.